हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो and your energy is high. You are doing more number of questions. So today in the class we will be doing some more questions and this time from electrostatics. ठीक है? First, I have included some really easy questions to just have an idea of what if there is cavity, charge distribution things and all. So first we will be going through that. After that we will be doing more questions that will require more calculation. ठीक है? चलो. So let's start with the very first one. Just everyone go through it. Let me know your answers. ठीक है? Yes. Nobody? सिंपल है. सिंपल वे में सोचो, यू विल गेट द आंसर. यस. चलो डिस्कस करते हैं फिर. देखो, क्वेश्चन क्या है. देर इज अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कंडक्टिंग, राइट? एंड दिस इज न्यूट्रल. देर इज नो चार्ज ऑन इट. A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then what? So if you are given anything conducting, okay, and there is charge kept outside. Let's say this is positive charge. What do you think? What things can happen? सबसे पहले तो ये सोचो कि दिस इज अ कंडक्टिंग थिंग एंड यू ऑलरेडी नो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड cannot pierce conductor. Simple. So this charge will have electric field in this region, right? It will have electric field in this region, but the moment it will reach here, after that it won't be able to enter. एंटर नहीं कर पाएगा, है ना? क्यों नहीं एंटर कर पाएगा? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? कंडक्टर है. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पियर्स नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, शिल्डिंग है. इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे फील्ड आकर एंड हुआ है. एंड होने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस होंगे. ठीक है? एंड इफ हियर इज नेगेटिव चार्ज, सिंस दिस वाज अ न्यूट्रल कंडक्टर, इसके पास टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था जीरो. सो इफ free negative charge is getting accumulated on the right hand side, then free positive charge will get accumulated further apart, like far away. So सबसे दूर का distance क्या हो सकता है? On this surface, on the left surface. But overall, if you talk about the charge on this thing, only separation of charge has happened. No charge has been generated, I would say. So charge का separation हुआ है. Total charge still is what? Zero. Conserved है. So what will be the answer? जीरो. क्योंकि हमसे पूछा गया था नेट चार्ज ऑन द स्फीयर. नेट चार्ज इट इज टॉकिंग अबाउट. नेट चार्ज विल बी जीरो, राइट? तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? एवरीवन अग्री? इट शुड बी डी, है यस ना? मैम। या इट शुड बी डी. ठीक है, चलो. सिमिलरली अगर तुम्हारे कैविटी में चार्ज दिया होता है ना, सपोज कर लो यहाँ पे ये तुम्हारा कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है, एंड सपोज इन द कैविटी यू आर गिविंग चार्ज. कैविटी का मतलब देयर इज अ स्पेस which is having vacuum or air.
एयर और वैक्यूम होगा, तो एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्टैब्लिश होता है, दैट इज नॉट अ कंडक्टर, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट स्टैब्लिश बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज. Again, it cannot pierce this space because again that is a conductor, right? So conducting region में तुम्हारा क्या है, since this is a annular sphere, I would say, or this is not hollow something, this is conducting space. So electric field will not pierce this space. It means यहाँ पे end हुआ, फिर यहाँ से आता हुआ दिखेगा. ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो इसमें हुआ कुछ ऐसा, ये था पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आया. फर्स्ट लाइट प्लस लाइट, फर्स्ट लाइट तो यही है प्रियांशु. ओके. हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है. क्यू है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया. यू ऑलरेडी नो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसी डायरेक्शन में, आई मीन if there is free positive charges, then on free positive charge force will act in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इसका क्या मतलब है, इन दिस डायरेक्शन, और या फिर लेट मी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि सिंपल लॉजिक से जाते हैं. प्लस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव फ्री चार्जेस को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो नेगेटिव फ्री चार्जेस को इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना. अब पॉजिटिव फ्री चार्जेस कहाँ जाएंगे, यहाँ ऐसे जाएगा. ठीक है. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंड हुआ, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया. ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि इफ यू आर कीपिंग अ चार्ज इन कैविटी, दैट स्मॉल क्यू चार्ज will appear on the surface, will appear on the surface, that small q charge, है ना? So such sort of thing you must have done before also. One more thing I've taken here, do it, everyone go around it. कोई नहीं प्रियांशु. चलो again I will launch the poll. Okay, yes, प्रियांशु. चलो सभी लोग सॉल्व करो इस चीज को, कैसे आ रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट. Everyone got it? Okay. Two correct answers, one wrong. ठीक है. Okay, let's do it together. ठीक है, साथ में करते हैं. So what is the question here? There is a spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly. So let's say we have a solid sphere like this, and it has charge distributed uniformly. Done. After that, what we are doing is we are we are removing a small cavity out of it. I mean, we are taking a small portion out of it, and that is the question, right? Let's say center of this thing, this cavity taken out is this point. So let's say center of bigger one is C1 and this is C2. We have to calculate electric field at point P. This is point P. How we will do this? सबसे पहले देखो, without cavity, what will be the electric field
from C1 center. Let's say this bigger sphere. The C2, and then it can also have three epsilon naught. Your electric field because of smaller sphere. Yes, Sarsita. I got the thing. Okay, okay. Just give me 1 second. Okay. Am I audible now? Am I clearly audible? Yes, Yes. ma'am. Okay, okay. Okay. There was one interruption actually. So this is E bigger, E smaller. E net अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे? क्योंकि you are removing this portion, right? You are removing this smaller portion. So because of a smaller portion, electric field will get removed. So net electric field will be EB minus EX. That is how we deal with cavity, right? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Rho R1 by 3 epsilon naught minus rho R2 by 3 epsilon naught. तो do one thing, rho by 3 epsilon naught को आप common ले लो, R1 minus R2. Now what is this R1 minus R2? What is R1? R1 is this. What is R2? R2 is this. And what will be R1 minus of R2? Won't it be this thing? This C1 C2. अगर आप यहाँ पे ध्यान से लिखो, C1 C2 वेक्टर C1 C2 plus R2 is equal to R1. दिख रहा है ना? C1 C2 plus R2 किसके बराबर है? R1. So R1 minus R2 is equal to what? C1 C2. यानी कि what value of electric field we are getting, that is equal to rho by 3 epsilon naught C1 C2. And what is this C1 C2? This distance will be fixed, right? Distance between centers of these two will be what? Always fixed. So C1 C2 is a constant. Overall, rho is a constant. Three epsilon naught R1 minus R2, which is equal to rho by 3 epsilon naught C1 C2, right? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड आल्सो डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग C1 C2. अब मैं अगर तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं कैविटी में, that will look like what? Let's say this is center C1, this is C2. So C1 C2 का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा. यानी कि this is the direction. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विल बी यूनिफॉर्म लाइक दिस. ठीक है. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्वेश्चन कैन बी लाइक कि suppose in this cavity what you are doing, in cavity you are releasing a positive charge. ठीक है. So you have a positive charge, you are releasing it inside cavity. What will happen to the charge? First question. तो charge के साथ क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे चार्ज है, you already know इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है ऑन पॉजिटिव चार्ज. So on this positive charge, force will act in this direction. Done. So this charge will, let's say we are releasing it from rest from the point A. ठीक है. So force will act in this direction. It will accelerate. It will reach up to point B. Let's say at B there is elastic collision. What will happen? Its velocity direction will simply get reversed, and again now it will start moving opposite to the direction of electric field. It will retard, है ना? और ये ऐसे रिटार्ड होगा अप टू पॉइंट ए. अगेन इट्स वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? 0. अगर तुम ध्यान से सोचो तो
because there are no other resistive forces acting. We can say motion is periodic, right? So some sort of question can come from here. Cavity के अंदर electric field कैसा होता है ये जानना बहुत जरूरी है. So that will be always uniform in both magnitude, non-zero and uniform. ठीक है? Everyone got this? Yes, ma'am. चलो ठीक है. Let's do the next question. Do it now. Take your time. Do it. Let me know. ठीक है? चलो. I will be launching the code. सही से कैविटी को समझो और करो. ठीक है? आई एम हियर ओनली. Okay, this is multiple choice. So, okay, मुझे actually poll launch नहीं करना चाहिए क्योंकि this is multiple choice. Okay, sorry. ठीक है. This is not single correct, multiple correct. ठीक है. Answer accordingly. And the one answer that I got was not correct actually. So you need to recheck. Check the geometry of this cavity. Okay. So yes, yes. सभी लोग करो. Even if single you are getting, you can let me know. Answer क्या आ रहा है. हर्षिता, yes. वो करेक्ट होगा. एक और ऑप्शन यू नीड टू लुक फॉर. नहीं. सुरेंद्र, नहीं. चेक करो और भी. ए एंड बी आर कंडक्टिंग सर्फेस, राइट? तुम लोग ए ऑप्शन कैसे बोल रहे हो? अंधे हो क्या तुम लोग? डांटूंगी अब सीरियसली. अंधों वाली बात कर रहे हो तुम लोग. देखो कितना इजीली हम बोल देते हैं ना अंधे हो क्या, बट वी शुड नॉट टॉक लाइक दिस, राइट? बिकॉज I mean, if somebody sitting here is already blind, that's not his or her, fault. So it's quite normal to be blind. I know that's also a thing of nature. Sorry, but हाँ हम ऐसे कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अंधे हो क्या दिख नहीं रहा. That is so commonly said. Anyway, let's come to the question. So what is here? There is a conductor. There is a conductor, right? And then there is this cavity. See here, cavity is elliptical. It's not circular. What does it mean and how it is going to affect the distribution of charge and everything? See here, यहाँ पे ध्यान से देखो चार्ज Q है. We are talking about 2 points. Point A is here and point B is here. सबसे पहले I will go to the option A, जो कि बहुत लोगों ने मुझे suggest किया. You just look at point A and B. So distance of point A is less, distance of point B is far
more, I mean more, it's more, right? So electric field at A, what? It will be equal to what? KQ by, let's say this distance is R1, R1 ka square. Electric field at A. Electric field at B will be what? R2 ka square. KQ by R2 ka square. Electric field inversely proportional to distance. Distance is not same. Electric field is not going to be same, right? So option A cannot be correct. It's already false. Now let's talk about charge density at A and charge density at B. We talked initially or till now only about the circular cavities and how it affects charge distribution. See here, this Q charge is more closer to this region, right, than it is to this region. Done it? So this being a positive Q charge, it will attract negative charge here. And since this region is more closer to the charge Q, here negative charge accumulation will be more. Layman term में अगर समझो तो clear दिख रहा है ऐसा ही होगा. And at B point there will be less charge density. Done it? So at A and B, how charge density will be same or different? Let me know now. It has to be different, right? Because those two distances are different. ऐसे भी हमने एक चीज और पढ़ा है, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा. uh, if you talk about radius of curvature, charge distribution is more at point and ends. कोरोना डिस्चार्ज पढ़े होंगे. अगर अगर हमारे पास कंडक्टर है, एक रैंडम की चीज है, रैंडम सरफेस है, एंड इट हैज, आई मीन यहाँ पे देख लो, इस सरफेस का रेडियस काफी ज्यादा है, इस सरफेस का रेडियस ज्यादा है, लेकिन जो एंड्स है ना, जैसे ये पॉइंटेड एंड, इसका रेडियस ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो. दिस एंड हैज ए स्मॉलर रेडियस एंड यू ऑलरेडी नो. यस प्रियांशु, शार्प होगा तो ज्यादा डेंसिटी होगा. सो वी ऑलरेडी नो इफ एंड्स आर मोर शार्पर, यानी कि रेडियस इज लेस, then charge density we call it inversely proportional to radius. If radius is less, sigma is more. And in case of pointed conductors, what happens? Heavy amount of charge density will be there. And in front of conducting surfaces, we already know electric field used to be sigma by epsilon naught. And we have learned about dielectric breakdown of air. If this sigma is so higher, that sigma by epsilon naught is almost equal to 3 into 10 to the power 6 volt per meter. This is the dielectric strength of air basically. So if this value is equal to this, it will make air conducting. That is, its dielectric will break down. It will become conductor, and that is called corona discharge. You must have studied. हमारे लिए भी सिग्निफिकेंट ये है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है. तुम लोग जेई मेंस का क्वेश्चन भी किए होगे. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो स्फीयर था, दोनों को कनेक्ट किया तो हमने देखा था चार्ज Q1 फाइनल, Q1 Q2, अगर इन दोनों का रेडियस R1 R2 है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाता था? Q1 by Q2 directly proportional to R1 by R2, but sigma 1 by sigma 2 is inversely proportional to radius, right? Same thing is here. यहाँ पे देखो, this is less curved and this is but यहाँ पे opposite दिख रहा है मुझे. I cannot talk like this. डिस्टेंस के टर्म में मैं बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि नहीं रेडियस के टर्म में बात कर लेते हैं ना. जैसे ये वाला रेडियस तुम्हारा क्या है इसका, इस पॉइंट का रेडियस क्या है? R1 कम है, इसका क्या है तुम्हारा? ज्यादा है. मैंने क्या बोला? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जिसका रेडियस कम होगा वहां पे सिग्मा ज्यादा होगा. तो देखो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा जा रहा है ना. ठीक है, लाइक दिस. तो बी भी इनकरेक्ट है. ऐसे भी तुम्हें ज्यादा भी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दूर और पास से देख लो. जो ज्यादा चार्ज से पास है वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा. So B is incorrect. Now potential at A equal to potential at B. A and B point are points on the conductor. Conducting surface का point है ये A और B, है ना? And we already know that अगर surface conducting है, conducting surface क्या होते हैं? Equipotential होते हैं. उनपे potential क्या होता है? Same होता है. So at point A and B potential will be what? Same. C is correct. D, total electric flux through the surface of cavity is how much? So that is for sure true. क्योंकि according to Gauss law we know flux is equal to how much? E dot ds, Q enclosed by epsilon naught. ठीक है. So how much charge is inside this cavity? That is Q by epsilon naught. So D option is correct. C and D are correct. A and B are incorrect. Got it?
ठीक है, चलो do this last thing. This came in JEE mains basically, but I felt like including. इससे भी you will get to understand charge distribution. करो, I'm here. So this is a single choice basically. So I will be launching the poll here. You can answer those. ठीक है, चलो. अच्छा, एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना भूल गई. एनीवे, यू डू इट फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो. ठीक है. यस, एनी आंसर? Take it easy. I mean, take it the way we have done previous two questions. Go that way. You will get the answer. डाइपोल है ना, माइनस क्यू चार्ज इधर होगा, प्लस क्यू इधर होगा. आप देख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैसे अट्रैक्ट करेगा चार्जेस को. ओके, आई नीड टू स्लो डाउन. ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ. Should I do it for you? I mean, should we do it together? Okay, one correct answer. Very good. Chalo, I'm ending the poll now. See here, what is the case? There is conducting region, है ना, and then there is cavity in the middle, and there is minus q charge here and plus q charge here, right? First thing is surface charge density on the inner surface is uniform. It cannot be uniform. Why? Because this surface, all the points of this surfaces are not equidistant from plus q charge or from minus q charge. माइनस क्यू चार्ज से ये सरफेस ज्यादा पास है, प्लस क्यू चार्ज से दिस सरफेस इज मोर क्लोजर. So again, we cannot say here charge distribution will be uniform. We cannot say it. ठीक है. So first thing, it cannot be uniform. It will be non-uniform. क्योंकि देखो, अगर चार्ज सेंटर में रखा हुआ है ना, इक्विडिस्टेंट है हर पॉइंट से, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा. ठीक है. तो it cannot be the case. And the second, surface charge density on the outer surface depends on vector p. इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में लेकर जाती हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास ऐसा था, देयर वाज अ कैविटी एंड कैविटी वाज एलिप्टिकल. या फिर एक काम करते हैं, लेट्स से मैं कैविटी को सर्कुलर ही रखती हूँ. ठीक है, सर्कुलर कैविटी मैंने रखा, और लेट्स से दिस टाइम आई एम नॉट प्लेसिंग चार्ज इन द सेंटर, आई एम प्लेसिंग चार्ज समवेयर हियर, क्यू चार्ज. How will be the charge distribution? Since this is not symmetrically placed, not at the center, negative charge will be more close here because they are strongly attracted by q, and then here these charges will be more widely separate. Okay, so charge distribution won't be uniform. Now the question is, if negative charge is coming on this outer surface, then positive charge will go on this surface, right? Positive charge will go on this surface.
on the outer surface of conductor, जो conducting surface है, rectangular. Now the question is, what will be the charge distribution nature on the outer surface? Will it be uniform or will it be non-uniform? What do you think? Uniform होगा या non-uniform? बताओ. यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा. सॉरी, यूनिफॉर्म होना चाहिए तुमने बोला ना. यस, दैट विल बी करेक्ट. सॉरी सॉरी. या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, आउटर यूनिफॉर्म होगा. क्यों होगा? तो देखो, इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक चीज पता है कि चार्ज कहाँ है. चार्ज है कैविटी के अंदर. और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, ऐसे, ऐसे. ठीक है. इट कैनॉट पेनिट्रेट दिस रीजन, राइट? यू ऑलरेडी नो इट कैनॉट पेनिट्रेट दिस रीजन. देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो लाइक दिस बिकॉज दिस इज कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एंड इट विल गो यूनिफॉर्म. इसलिए क्योंकि चार्ज कैविटी के अंदर कहाँ रखा हुआ है, दैट इंफॉर्मेशन will not reach to the outer surface. Why this information will not reach to the outer surface? Because this charge is inside a cavity, and for this information to travel, electric field should travel between this region. But this region, in this region, electric field cannot travel. है ना, ये no pass region. Done it? And if electric field is not able to pass through this region, that information will also not pass. So basically कह सकते हो, there is person A sitting here, person B is there. A wants to connect with B, A cannot connect with B because there is no network reason. This is no network reason. ठीक है. So A किस हाल में है, B won't be able to know. So where the charge is placed, at the center, closer to the perimeter, where it is, that information won't reach to B. And if it is not reaching, always electric field here will go uniform. It will get uniform with this field. That's the thing. Okay. So surface charge density on the outer surface depends on vector P? No. Vector P पे depend नहीं करेगा क्योंकि vector P का information is not, will not be able to reach to the surface, I would say. Simple answer दो कि it cannot reach there. So it won't get affected. It will be as if, I mean, it won't get affected simply. ठीक है. तो टू भी है तुम्हारा इनकरेक्ट, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हुआ. नाउ थर्ड में आ जाओ. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेल इज जीरो एवरीवेयर. नो, इनर सरफेस पे जीरो कैसे होगा? यहाँ तो अट्रैक्ट हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा. सो इट्स नॉट जीरो. Now, electric field outside the cell is same as that of a point charge at the center of the cell. Yes, you have already studied it. Ki, I mean, if you are giving any charge to cavity, that charge appear on the surface, and it feels like electric field at any outside point will feel like this charge Q is at the center. Okay, so fourth option is what? It's correct. This is wrong. Anyone having any doubt? ठीक है, किसी को डाउट है बताओ. नहीं, चलो. अगर नहीं है, we will move forward. We will do these questions. ठीक है. We have learned enough about cavities, electric field कैसे draw करेंगे, how will be the charge distribution and all. We have studied, right? Now we need to do questions more deeply. तो करते हैं, चलो. This is your question. Take some time. Do it. Let me know.
Okay, Priyansu, I hope you have done it before, right? So that's great. Vasant, you were not in previous class, right? You appeared for the test. No, madam. Okay, Priyansh. Done. Great. Okay, Sohel. Yes. Good. आंसर दिख रहा है? दिखना तो नहीं चाहिए. ओके. प्रीवियस केस में भी दिख रहा था क्या? ओके. ओके, आई विल डू वन थिंग. एक सेकेंड रुक जाओ. Just give me some seconds. Now it's not visible, I guess. Okay. Okay, sorry. Okay, Priyansu. Let's do it now. Okay. ठीक है, चलो करते हैं. So, how we can solve this question more easily, I would say. चलो. See here, what the question is saying. I don't know what problem happened. I'm not able to see my pointers. चलो ठीक है. Now it's visible. So, there is a point charge. Okay, give me some time. ठीक है. So there is a point charge plus Q, and that is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown in the figure. Which of the following is correct? Electric flux through the curved surface. You just think here like this. Suppose electric field is entering this curved surface like this. So whatever field is entering, that will contribute to the flux, right? So it is entering here like this. And whatever flux has entered the curved surface, that flux will leave this surface, right?
डन है. So one thing is clear, one thing is clear, flux, whatever flux is entering the curved surface, same flux will go out of this disc like a structure at the bottom, right? ठीक है. So let's say phi 1 flux is entering, done. Then phi 1 flux here will go out. So flux entering is taken as negative, done है. So flux entering through the curved surface is minus phi 1, I would say, or flux through curved surface is minus phi 1, flux through bottom surface is phi 2. Can we calculate phi 2? Is it possible? So yeah, we can calculate it easily with the help of solid angle concept. जैसे देखो, हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और इसके सामने एक ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है ना. यहाँ पे क्यू चार्ज है, एंड इन फ्रंट ऑफ इट देयर इज अ डिस्क एट द बॉटम, डन है. So flux will pass through this, through it like this, है ना. And this flux we need to calculate. How we can do this? Let's say there is a flux q. देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं एक काम करती हूँ, अभी आंसर्स दिखेगा. आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा. एक्चुअली आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट दिस, सम प्रॉब्लम हैज हैपेंड. आई एम रियली सॉरी. So let's go this way. Here, let's say this is plus q charge, and then what is happening? We have a solid or hollow sphere like this. What will be the total flux through this surface? Definitely you will say flux will be q by epsilon naught. Why? Because this is a complete closed surface. Inside it, charge is q, flux is this much. What is the solid angle this closed surface is making at the center? So that solid angle is 4 pi. Because you already know, if there is a closed surface, then closed surface at the center forms a solid angle equal to 4 pi. If somehow we can calculate what is the solid angle getting formed by this surface at this point, then we can calculate flux through this. How we can calculate the solid angle? So solid angle के लिए तुम लोगों को idea होगा, if this angle is theta, then complete solid angle can be written as 2 pi 1 minus cos theta. This is the formula. Okay, so we can write it like this. If there is such sort of geometry, then we can say solid angle getting formed at certain point O, which is making an angle theta like this, then delta solid angle will be 2 pi 1 minus cos theta. Done it? So because of 4 pi solid angle, how much flux is there? Q by epsilon naught. Unitary method now you use. So because of unit solid angle, how much will be there? Q by 4 pi epsilon naught. Now this is the thing, right? This is the solid angle. What will be the value of theta here? अगर आप यहाँ पे theta निकालो, so this is this, and this is this, this is this. This angle is your what? This is theta. So this is r, this is r. Theta is 45 degree. So 1 minus cos theta क्या हो जाएगा? Here you will write 2 pi 1. Sorry, yes. एक काम करती हूँ, थोड़ा ऐसे लिखती हूँ यार. Let me write it here. So this is q by 4 pi epsilon naught into 2 pi into 1 minus 1 by root 2. This will be the answer, right? So this is equal to q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. So this is the flux. ठीक है, this is the flux. अब आप देखो फ्लक्स का आंसर नेगेटिव में दिया है, बिकॉज दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज एंटरिंग हियर एंड द सेम अमाउंट विल गो आउट फ्रॉम हियर. आई मीन जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज द फ्लक्स गोइंग आउट. What will be the flux entering? Negative of it, and that is flux through the curved surface. So flux through the curved surface is same as this with negative sign. So q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. This angle thing you should remember. ठीक है. सेकेंड में जाओगे, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस. अब देखो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉर्मल होगा? व्हाट यू थिंक? क्या सोचते हो तुम लोग? सी हियर, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस बोला है. सरकमफ्रेंस की बात नहीं कर रहा, सरफेस की बात कर रहा है. सो सरफेस मीन्स यहाँ भी पॉइंट हो सकता है,
यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. So the electric field normal to the flat surface is constant. Will it be constant? Let's see. So electric field because of this charge at this point will be this much. At this point will be this much. है ना? इस point की अगर आप बात करो तो it will be this much. Now just look at the angle thing. This is this angle. And let's talk about this angle. This is theta dash. Clearly you can see theta dash is less than theta. है ना? And if it is less than this, then I mean magnitude wise there is no symmetry here. You can see like electric field at this point is I mean distance क्या होगा surface के हर point से तुम imagine करके देखो तो distance will be same. It will be same or different, बताओ. I am talking about this R1, R2, R3. है ना? नीचे डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे चार्ज क्यू है. ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रहे. सरफेस के पॉइंट्स ले लो. डिस्टेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? जस्ट थिंक अराउंड इट. विल इट बी सेम और डिफरेंट? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ रही हूँ? यहाँ पे ये पॉइंट है, इससे ऐसे एक पॉइंट है. ठीक है. आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट सरकमफ्रेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जनरल पॉइंट. यहाँ से सारे डिस्टेंस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? Different? डिफरेंट जाएगा. Yes, है ma'am. ना? हाँ डिफरेंट जाएगा. क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस डेफिनेटली आर नहीं है ना? सो दे आर डिफरेंट. अगेन वैल्यूज, आर का वैल्यू इज डिफरेंट. एंगल विल ऑल्सो चेंज. सो वी कैन नॉट से द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सर्फेस is constant over the surface क्योंकि electric field is not uniform. You can see here value will be different, here value will be different. We cannot say this. So B option geometrically you can see it's not correct. It's not there. ठीक है. C की अगर बात करो total flux through the curved surface and flat surface is this. No, because Q is not inside the closed surface. And so this is incorrect. The circumference of flat surface is equipotential. This will be correct क्योंकि तुम अगर ध्यान से ऐसे देखो, this is your circumference. यहाँ से अगर यहाँ पे चार्ज है तुम्हारा तो यहाँ से कोई भी तुम लाइन बना लो, कोई भी लाइन बना लो. ये सारे कोई भी पॉइंट्स को कनेक्ट करो चार्ज से. ऑल पॉइंट्स विल मेक आई मीन आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्यू एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस. Right? So at all of these points, what will happen? KQ by R is same. Potential is same, right? This is everywhere it is KQ by R. So that is equipotential. Circumference is what? Equipotential. Done है? समझ रहे हो? Yes, ma'am. So correct answer will be which one? A and D. देखो थोड़ा इमेजिन करना था क्वेश्चन बी में. अगर तुम लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन है, यू कैन क्लोज योर आईज, यू कैन इमेजिन दिस. And just above the center there is charge q kept. Just try looking at it from that frame. You will get the thing like distance is not same, angle is also varying, so we cannot talk like that. Okay, chalo do this. I'm actually sorry for the answer thing visible. चलो मैं इसको कट ही कर देती हूँ. ओके, स्टिल से. चलो कोई नहीं, माफ करो उसके लिए. तुम लोग एक काम करो, क्वेश्चन पे फोकस करो. राइट नाउ नॉट विजिबल एट ऑल. अच्छा ठीक है, ये सही है. चलो थैंक यू.
ओके हर्षिता, सही है। प्रीवियस केस में कुछ प्रॉब्लम हुआ था आई गेस, इसलिए विजिबल था, क्योंकि कभी होता नहीं है। थैंक यू। इट गॉट सॉर्टेड इट मीन्स। ओके प्रियांशु। ओके। Sorry, I was muted, Priyansu. I was trying to speak. So, I mean, keep on doing questions, but I will let you know in the last one. Okay? Whatever is your doubt. Okay, so we can do this question now. Let's do it together. So there is an infinitely long, thin, non-conducting wire parallel to the z-axis. Z-axis is what? Perpendicular to the plane. You can see here, Z dotted line is made. So this is this. It pierces a thin, non-conducting spherical cell of radius r such that PQ is subtending an angle 120 degree. You can see here. Permittivity of free space is given. Which of the following statement is correct? First thing is electric flux through the cell. So this is the cell. We are asked electric flux. We will try to see how much amount of charge is enclosed. So this rod is positively charged. Charge density, that is charge per unit length, is given as lambda. You can see here PQ length of the rod is inside the spherical cell. So how much charge is there inside? That is PQ length into lambda. Because charge per unit length is lambda, its length is PQ, it will have total charge PQ into lambda. ठीक है? अब आप एक काम करो, PQ निकाल लो. PQ will be how much? This is 120, so this is 60. And here, let's say this is X. Then X by R is equal to how much?
x by r is sin 30, sin 60, right? So that is root 3 by 2. So x is how much? Root 3 by 2r, and pq is equal to 2x, that is equal to root 3r. So what is the flux? अब यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो लिखूंगी q enclosed by epsilon naught. Q enclosed is how much? Root 3r into lambda divided by epsilon naught. So correct answer A is correct, right? Let's look at B option. The Z component of electric field is zero at all points on the surface of the cell. अगर आपने linear charge को पढ़ा है ना, and you know how the electric field lines look like. Since this is infinitely long, there won't be any fringe effect. Fringe effect क्या होता है? If there is a finite rod, then in the middle electric field line will be straight. It will be straight like this. But near the ends, what will happen? Field line will be curved like this. It may be curved like this. Okay? Near the ends. But since this is infinitely long, everywhere we can assume electric field lines is coming out like this, straight line. So here electric field lines is like this. It is like this. ऐसे ऐसे बनाओगे है ना. Now tell me what is the component of this electric field along the z direction? What is the component of electric field along z direction? It's जीरो। zero. Yeah, it's zero. So option B is what? Uh, zero. Yes. So option B is correct, right? मैम Yes. डाउट Yes. आ रहा था मुझे। हाँ बोलो. मैम मुझे इनफाइनाइट इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें फॉर्मूला हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए के लैम्डा बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो दोनों 90 डिग्री, तो उससे भी जीरो हो जाएगा, उससे पता लग रहा है। लेकिन इसमें कंफ्यूज में हो रहा था ना कि जो इस सेल के अंदर जितना चार्ज आ रहा है उसकी वजह से तो मैम इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कंपोनेंट में आएगा ही ना। कंफ्यूज हो रहा था, वैसे तो आंसर आ रहा था। अच्छा, तुम ऐसा कर रहे हो. यू आर कंसिडरिंग दिस पोर्शन एज ए स्मॉल फाइनाइट पोर्शन, राइट? हाँ। यही कर रहे हो ना तुम, तभी तुमने मुझे फॉर्मूला बोला ना, साइन थीटा 1 और समथिंग, तो हम राइट? इसकी वजह से जेड कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैम, बी हो कि नहीं हो। एक सेकेंड, लेट मी स्विच. आ नहीं रही थी. हाँ बोलो, क्या क्या बोला तुमने, एक बार और रिपीट करो प्लीज. मैम मैं बोल रहा था कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चेक करते वक्त सेल को क्यों नहीं कंसिडर करा। जो सेल को कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर चार्ज तो आ रहा है। हाँ, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि सेल है, और सेल पे अगर चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, वो कह रहे हो क्या? जेड कंपोनेंट में आता है कहीं से भी कहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, देर इज अ लीनियर चार्ज लाइक दिस, infinitely long. So its electric field will be like this. It will be like this, है ना? अच्छा, तुम कहीं इंड्यूस चार्ज की बात तो नहीं कर रहे हो? दिस इज नॉन कंडक्टिंग. नो मैम, इंड्यूस चार्ज की नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेल को अगर कंसीडर करेंगे नॉन कंडक्टिंग सेल को, तो हमारा जो ये लाइन है वायर, उसके अंदर से तो एंटर करके मतलब पास हो रहा है। डन है. हाँ, तो कुछ चार्ज इस सेल के अंदर भी तो आ रहा है। चार्ज तो तुम्हारा वायर के ऊपर ही है ना, जो ये लॉन्ग वायर है. बाहर कहाँ फ्लोट तो नहीं कर रहा ना, अंदर ही है, इसी पे है. हाँ, तो उस पार्ट की वजह से थोड़ा मतलब डिफरेंस नहीं हो जाएगा, जेड कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वायर है ना, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और जब उसका कुछ पोर्शन अंदर जा रहा है, उससे उसका फैक्ट नहीं चेंज हो रहा कि दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग और नॉट. आई मीन दैट फैक्ट इज स्टिल द सेम. इट इज नॉट बिकमिंग फाइनाइट, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड देन यू आर कैपिंग दिस विद दिस थिंग. दिस इज नॉन अगर कंडक्ट. अगर हाँ, सेल कंडक्टिंग होता तो। अगर तुम्हारा कंडक्टर होता तो यहाँ पे आई मीन ऐसे हम नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारा कंडक्टर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना. सो लेट मी गो टू दैट पॉइंट. अगर तुम कह रहे हो कंडक्टर होता,
तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होते। डन है। और ये क्यों होता? रीजन बिंग, जैसे देखो अगर इस रॉड को बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर पाते। और बेसिकली लेट मी डू लाइक दिस, जैसे देखो इसको ऐसे बनाओ, फिर तुम्हारा कर्व जाएगा। और कर्व इसलिए जाएगा क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज कैरिंग वायर है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, होगा ना? सॉरी। ठीक है हम। ओके। हाँ, एक एक सेकंड। नहीं नहीं, मैं समझा रही हूँ उसको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नहीं, समझना बेहतर है। अगर कंडक्टिंग होता तो हम ड्रॉ कैसे करते? एक काम करती हूँ, थिन लेयर ऐसे लेती हूँ, क्योंकि कोई भी तुम हॉलो स्फेरिकल सेल बना रहे हो, उसका कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा। ठीक है। सो ऐसे मैंने बनाया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे अट्रैक्ट होगा। ठीक है। ऐसे दिस विल कम लाइक दिस, एंड पॉजिटिव चार्ज विल गो ऑन द सरफेस। ठीक है। अब इस पे पूरा नहीं मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो तुम ऐसे बनाओ। ठीक है। और यहाँ से फील्ड लाइन क्या होगा ना, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, लेकिन सिंस नेगेटिव चार्ज इधर है तो ऐसे एंड करेगा। और इस तरह से एंड करेगा ना कि उस सरफेस के वो परपेंडिकुलरली एंड कर रहा हो। ठीक है। ऐसे निकलेगा और ऐसे एंड करेगा, such that it is perpendicularly ending, and again it is getting released from here like this. So उस केस में तुम्हारा जो फील्ड लाइंस जो निकल रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट से, वो निकला तो स्ट्रेट था, लेकिन सिंस नेगेटिव चार्ज देयर इज इन द सराउंडिंग, ये कर्व्ड हो जाएगा, जो कि फ्रिंज इफेक्ट में हम पढ़ते थे। दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग, राइट? क्योंकि यहाँ का जो फील्ड लाइन से उसको नीचे वाला फील्ड लाइन रिपेल करेगा, सो इट विल गो लाइक दिस, तो कर्व्ड हो जाता है फ्रिंज पे, किनारे पे। सिमिलर सिमिलर थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं बच पाया। जैसे अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट है और यहाँ पे तुम नेगेटिव चार्ज रख दो, हाउ हाउ यू विल ड्रॉ द फील्ड लाइंस नाउ? यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, यू विल ड्रॉ, सॉरी, यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है। सो सिमिलर थिंग विल हैपन। डन। ओके मैम। लेकिन सिंस ये नॉन कंडक्टिंग है, इट विल एंड लाइक दिस। ठीक है। इज इट ओके सोहल? यस मैम। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मैं बेकार में बोल रही हूँ। ओके ओके। आई थॉट लाइक देयर वाज कंफ्यूजन। सी, the electric flux through the cell is this. No, this is wrong. The electric field is normal to the surface of cell at all points. No, it's not normal, right? Done. So correct option is N. Now do this. अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सो सभी लोग सही से आंसर करना। ठीक है। यू कैन डू इट इजिली। सोहेल। यस। यस। वेरी गुड। हर्षिता, तुमने कुछ पूछा था शायद। ओके, सॉरी यार, भूल जाती हूँ मैं चीजें बहुत जल्दी जल्दी। यू आस्क्ड समथिंग आई गेस। हर्षिता, यू गॉट इट? अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आई कंप्लीटली फॉरगॉट।
Priyansu, yes. This question I won't be solving because you just need to solve it and then put in the things. जैसे डाइपोल के लिए जो भी तुमने इक्वेटोरियल पोजीशन में जैसे डेरिवेशन किया है, सेम वे वेक्टोरियली सिंपली यू हैव टू लुक एट की व्हाट विल बी द डायरेक्शंस, नथिंग एल्स. All charges are of same magnitude that is given, right? So I will be closing the discussion here for this. I mean, let's do it together. So Q1, Q2, Q3, Q4 are of same magnitude. They are placed at this distances. Direction of forces acting on the charge Q बताना है हमें for something given in the column 1, and then there is things in column 2. So if all are positive, then I mean force because of Q1 will act in this direction, because of Q2 in this direction, because of Q whatever it is, Q3, it is in this sense, and because of Q4, this is in this sense. You can see here, if this is F1, this is F2, then F1 is equal to F2. If this is F3, this is F4, F3 is equal to F4, because they are quite symmetrically placed, right? So if you take the components, horizontal components will get cancelled, vertical components will get added up. So for A, correct option should be plus y. So A के लिए आप क्या लिखोगे? Plus y, that is R. Similarly in B, Q1, Q2 positive, Q1, Q4 negative. वेक्टर थिंक करना है तुम्हें, डायरेक्शंस को सही से देखते जाना, एंड यू विल गेट द आंसर्स. ठीक है, लेट्स डू सम मोर गुड क्वेश्चंस. या लेट्स इन्वेस्ट सम टाइम हियर. तो तुम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, समझो और करने की कोशिश करो. Give me just 1 minute. I will be back in 1 minute. ठीक है, you just in the meantime you read the question, try doing it. ठीक है, चलो. Yes, I'm here. Anyone got some idea? इनको मैम सिलेंडर या मतलब कोई ऐसा सरफेस बना लेते हैं ताकि उसके अंदर आ जाए, या कुबॉइड बनाते हैं सर. ओके, सो आ रहा है वैसे. ट्राई कर रहे हैं. हाँ हाँ, करो करो. दैट इज व्हाट विल हेल्प यू, है ना. सोचो.
टू बी ट्राई टुगेदर। एक काम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, चलो। So there is an infinitely long uniform line charge distribution of charge. So there is such sort of wire again, which is having certain linear charge density. Let's say lambda. Let's say this has a positive charge. So हमने काफी सारी डीलिंग करी है इसमें. We see if positive charge is there, electric field lines will look like this. And you must have seen what is the Gaussian surface for this. Gaussian surface क्या होता है इसके लिए? If you remember, uh, सिलेंडर में yeah, cylinder. Yeah, answer. lambda 2 pi epsilon. Sorry, Surinder, your voice is breaking actually. So, it will be cylinder like this. ऐसा बनाया है ना हमने, काफी बनाया है ऐसा. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब ये मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, तुम खुद सोचो. अगर मेरे पास ऐसा कुछ वायर का पोर्शन है इनसाइड द सिलेंडर, अगर सिलेंडर के थ्रू मुझे फ्लक्स निकालना हो तो बहुत इजी है. लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे. इफ एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर देन. But here there is not a cylinder, rather there is a tube. There is a seat, right? This is a 2D surface. There is a 2D surface, and through this we have to calculate the flux. How we can think around it? Let me tell you one more thing. एक काम और करो. Suppose this is the cylinder, and now what you are going to do? ये तो axis है cylinder का. You are cutting the cylinder from here. यहाँ से तुम सिलेंडर को ऐसे कट करके देखो, और कट करके ना उस टुकड़े को निकालो और उसका क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखो कैसा दिखेगा अगर करा तुमने तो. व्हाट डज रेक्टेंगुलर। कुछ ऐसा 3D होगा. कैसा बनाऊं मैं समथिंग, कैसे बताऊं. ऐसा कुछ होगा ना. ये इसको देखो ध्यान से. ऐसा बुक है ये. दिस इज द बुक, राइट. सो इसको ऐसे अगर ब्रेक करो, कट करोगे, सपोज हाफ पोर्शन में मैंने कट किया, सो हाफ सिलेंडर विल लुक लाइक दिस. है ना, ये पूरा सॉलिड होगा. हाफ सिलेंडर इज दिस. बट इस सिलेंडर के तुम सरकमफ्रेंस को ध्यान से देखो. ये ऐसा 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 सरकमफ्रेंस कैसा दिख रहा है. सरकमफ्रेंस कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल. And rectangular. यस. सो सरकमफ्रेंस अगर रेक्टेंगुलर है, अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, और यहाँ से तुम्हारा लाइन चार्ज जा रहा है. तो इसका फ्लक्स है ना, इधर से ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सॉरी, स्ट्रेट. सो वो रेक्टेंगुलर लैमिना के थ्रू जा रहा है, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सी कि ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है बेसिकली वो कितने पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है, इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को. यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज द एक्सिस. दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज आवर. जैसे ये डायग्राम को मैंने ऐसे बनाया है, यहाँ वाले डायग्राम को ध्यान से देखो. दिस लाइन चार्ज डेंसिटी इज अलोंग द वाई एक्सिस, राइट. और इसको मैंने ऐसे खड़ा करके बना दिया. सो दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस. और ये जो तुम्हारा है, विच थिंग, I mean, this A, B, C, D, this is in which plane? XY plane. So, कैसे दिखाऊं तुम्हें एक्चुअली, पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे या नहीं. दिस इज see, this is Y and this is in your XY plane. ठीक है, according to the question, this is your along Y axis and this is in your XY plane. देखो थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना प्लीज. एंड नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि ये वाला जो पोर्शन है, जैसे इस स्मॉल रेक्टेंगुलर लैमिना को तुम छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हो, छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक कर सकते हो, है ना. सो फॉर एनी स्मॉल पोर्शन इफ आई सी हाउ मच एंगल इट इज फॉर्मिंग हियर, अगर ये एंगल मुझे निकालना हो तो मैं ये वाला लेंथ लूंगी, ये वाला. And this is equal to how much? This is the length of this thing. And if this is the length,
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए। डायग्राम को तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, this is your A, and this distance of wire from the rectangular lamina perpendicular was how much? Root 3 A by 2. If you will calculate angle, you will get here 30 degree. ठीक है? Now what is the significance of this 30 degree? You just see here, total flux अगर मैं बोलूँ ना तो कितना बोलोगे? लैम्डा L by epsilon naught इस टोटल के थ्रू, ठीक है? Now flux through ABCD will be equal to how much? So मैंने बोला है 1/6 होगा। Why I'm telling 1/6? जैसे इस रेक्टेंगुलर लैमिना को तुम ऐसे पकड़ के चारों तरफ से घुमा दो। if you let it rotate like ऐसे गोल गोल, जैसे रेक्टेंगुलर लैमिना को तुमने पकड़ा and you are just letting it rotate through 360 degree, then what will happen? It will cover whole the cylinder, है ना? ये whole cylinder को cover कर लेगा। And how much angle it is occupying? It is occupying 60 degree। ये 60 degree है, ठीक है? और होल करोगे तो कितना होगा? 360। सो ओनली 60 डिग्री वाले रीजन में तुम्हारा फ्लक्स जाएगा, क्योंकि उसी रीजन में सिर्फ हमारा लैमिना रेस्ट कर रहा है, ठीक है? सो टोटल फ्लक्स मैं बोलूंगी लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस स्लैब इज ओनली ऑक्यूपाइंग द 1/6 पोर्शन, सो आई विल से फ्लक्स इज 1/6 ऑफ दिस, ठीक है? अगर तुम लोगों को एंगल नहीं समझ में आ रहा है, यू नीड टू लुक एट ज्योमेट्री अगेन। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ मुझे, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैम ये एंगल वाला रिपीट कर देना दोबारा। अच्छा, ठीक है। सो एक काम और कर सकते हो, बहुत जगह इसको स्फीयर के फॉर्म में लोग ड्रॉ कर देते हैं, बट ओके ये नहीं आया, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, देखो यहाँ था मेरा सिलेंडर, मैंने ये बनाया एक्सिस और ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे तुम्हारा रेक्टेंगुलर लैमिना, ये है तुम्हारा एक्सिस का पॉइंट। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो है वो मेरा कितने एंगल को रखे हुए है, ये लैमिना कितने एंगल को रखे हुए है। टोटल एंगल की बात करूँ तो 360 है, बट ये कितना एंगल है, दिस वी वांट टू कैलकुलेट। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इसके एक्सिस से, इस लेंथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना दिया हुआ है? √3 A/2। सो लैमिना से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? √3 A/2। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्सिस से इस लैमिना का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया √3 A/2, एंड देन दिस साइड विच इज, आई मीन देन दिस साइड, one side is equal to how much? This is your A, another is your length L। और एल लेंथ के पैरेलल ही तो मैंने क्या बनाया है, एल लेंथ के पैरेलल ही सिलेंडर बनाया है ना। देखो यहाँ पे ये एल लेंथ है, अब देखो ये वाला लाइन चार्ज है, तो इससे तो ऐसे ही फ्लक्स आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा ना। सो अगर तुम्हें गॉसियन सरफेस बनाना है तो तुम गॉसियन सरफेस ऐसे ही तो बनाओगे ना। तो बेसिकली दिस एल लेंथ इज पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस, सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एल लेंथ पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस मैंने किया, ठीक है? यानी कि ये वाला ए हो जाएगा फिर, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे दिखने में ए बड़ा लग रहा है एल से, बट लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, समझ रहे हो? यस मैम। मैम अपर सरफेस बनाओगे तो ज्यादा मतलब विजुअलाइज हो जाएगा, सिलेंडर का अपर सरफेस। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल रहे हो? अच्छा तुम लोग समझे कि नहीं, मैंने मुझे ये बताओ, तुम लोग समझ गए तो मेरे लिए काम खत्म है। किसी को डाउट है? एनीबडी? अगेन आई विल रिपीट, ये तुम्हारा लाइन चार्ज है अलोंग द वाई एक्सिस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। हमेशा गॉसियन सरफेस हम कैसे बनाते हैं? वी मेक गॉसियन सरफेस इन सच अ वे सच दैट दैट सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वी ऑलरेडी नो लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर होता है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल जाएगा, ठीक है? और इसका प्लेसमेंट को तुम ध्यान से देखो, इट्स प्लेसमेंट इज जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे मैं सही से कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसको मुझे वापस से सही से रखा हुआ नहीं है ना, आई मीन इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट करके इधर बनाया है।
आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू गेट इट और नॉट। समझ में आ रहा है गोट। सबको? चलो ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दूसरा वे में सोचूंगी। बट फिलहाल तो मुझे यही लगता है। एक सेकंड मुझे टाइम देना थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है? यार मैं हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले जो सिलेंडर का अपर सरफेस है ना, उससे अच्छे से थोड़ा विजुअलाइज हो पाएगा, वहां से अगर ड्रॉ करके देखो एक बार। लेकिन अपर सरफेस से तो फ्लक्स जाएगा नहीं ना? इस फ्लक्स की बात नहीं, जो एंगल निकालना है और जो प्लेन दे रखा है, अच्छा, तो तुम अब कह रहे हो विजुअल ऊपर, एंगल अच्छे से निकल जाएगा। ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन को बोल रहे हो, है ना? मतलब स्फीयर की तरह बनाने के लिए बोल रहे हो मुझे, सर्कुलर, सॉरी। यस। हाँ, हर जगह सर्कुलर ही देकर सबने एक्सप्लेन करा है, बट आई आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग इट दिस वे सो दैट आई कैन शो यू, बट ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं हम। एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और चलो ठीक है, if you are not able to get previous one I can show you in different way। जैसे देखो, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो। लेट्स कंसिडर द होल, आई मीन जैसे अगर 360 डिग्री की बात करो तो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है? एंड योर दिस रेक्टेंगुलर थिंग इज, आई मीन इन दिस सेक्शन इट इज इंटरसेप्टिंग दिस पार्ट। जैसे यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेट दिखाया था वो ये वाला पार्ट कंटेन किया है, ठीक है? सिलेंडर के अंदर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चेक करो तो ये वाला पोर्शन है, ऐसे ही फ्लक्स जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा ना। सो दिस लेंथ के अलोंग जा रहा है, यानी कि ए, ठीक है? सो यहाँ पे आप ए बना लो, दिस इज सेंटर। इससे यहाँ का डिस्टेंस कितना था? अब आप देख लो ये पूरा एंगल क्या है, ठीक है? सो इफ नाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, होल एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। सो पूरे चार्ज के लिए, लैम्डा एल चार्ज के लिए फ्लक्स होगा तुम्हारा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड सिंस दिस इज ऑक्यूपाइंग ओनली 60 डिग्री, सो 360 डिग्री के लिए इतना फ्लक्स है। 60 के लिए यू विल कैलकुलेट लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। तो मैंने ये सिंपल सा नहीं किया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि क्रॉस सेक्शन कैसे कट होगा एंड व्हाई इट इज लाइक दिस, ठीक है? सो आई मीन ओवरऑल अब समझ में आया होगा। एंगल 60 डिग्री का है। हाँ, यस। अब 120 डिग्री आ रहा है पूरा तो। 120? हाँ। कैसे? मुझे तो 1/√3 आया था। कैसे आ रहा है देखो, दिस इज a/2 राइट, दिस इज √3 हाँ। a/2, लेट्स से दिस इज थीटा। सो हम्म। tan थीटा इज हाउ मच? इट इज √3, दैट इज दिस थीटा इज 60 डिग्री, सो दिस विल बी 30 डिग्री, राइट? ओके मैम, आई या विल टेकिंग। या यहाँ पे मैंने डायरेक्टली निकाल दिया है, ये एंगल करके निकाल दिया, इसलिए ऐसे लिखा था। चलो, डू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इजी। मतलब जितना लंबा जो दिखता है उतना इजी होता है, तो तुम लोग पढ़ोगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। पढ़ो और करो।
सबने पैसेज पढ़ लिया तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। एक एक जगह रख नहीं पाई क्योंकि क्वेश्चंस यूज टू बी एक्चुअली बिगर। सो यहाँ पे अगर देखो तो हमें बॉल के मोशन के बारे में पहले बात करनी है। व्हाट विल बी हैपनिंग टू द मोशन ऑफ बॉल। ठीक है। सो it will execute simple harmonic motion. It will go and come back instantly or after some time, or it will remain there. Options are like this. जब पैसेज पढ़ना हो जाए, तुम लोग डायग्राम बना लियो, सही से समझ गए हो, देन टेल मी, आई विल टेक यू टू द क्वेश्चन पेज। ठीक है। वी शुड हाईलाइट सम पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिया है, अज्यूम देयर आर नो कोलिजन बिटवीन द बॉल्स, इसको हाईलाइट कर लो, है ना। So while reading the passage, we should highlight points so that we don't have to repeat time and again. Done it? ग्रेविटी को इग्नोर करना है ना। चलो मैंने भी पढ़ लिया। सबका पढ़ना हो गया। यस मैम। चलो ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। क्या होगा बॉल के साथ, क्या सोचते हो तुम लोग? ई जीरो है ना? इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, वो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, रेस्टिट्यूशन। विच थिंग? रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, हाँ, दैट इज जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई इज जीरो। यस, small e is zero. No collision in this space. No collision here. क्योंकि आपस में ये कोलाइड नहीं कर रहे while moving. So no collision on the way. And this is supplied with positive charge. This is supplied with negative charge. These are conducting spheres. ठीक है? These are conducting spheres. What will happen? बॉल विल स्टिक। क्या? सी ऑप्शन है। T and remain there. तुम्हें लगता है वहां रुक जाएगा वो? तुम वहां तक सही सोच पा रहे हो, वो जाएगा। जैसे होगा क्या यहाँ पे? अगेन चार्ज हो जाएगा। यस सुरेंद्र, दैट फील्स लाइक करेक्ट। सो एक चीज ध्यान से सोचो, यहाँ पे पहले न्यूट्रल कंडक्टर्स थे। ठीक है। द मोमेंट यू आर गिविंग, आई मीन यू आर कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हाट विल हैपन? सडनली इस सरफेस का पोटेंशियल हो गया v, यानी कि वॉट एवर स्फीयर इज इनसाइड विल कैरी पोटेंशियल v। व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, इट हैज पोटेंशियल v at its surface. What does it mean? It means it has charge q gained. Done. So it gained some q charge, and that is why its potential is v. Done. So every sphere inside this space
will gain charge q, and hence every sphere will have same potential v on its surface. Similarly here the potential is negative. ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, सो ऑल दीज स्फीयर्स विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस. डन. ऑन दिस फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. A sphere will start moving in this direction. Since there is no collision in the way, nothing happened to its velocity, nothing, I mean, no change in velocity because of collision, only because of force acting, it will reach here. Now it has reached here. And remember, this space is a negative space. Okay? When positive charge will reach here, having positive potential, its potential will gradually decrease. है ना, नेगेटिव चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट होगा, ऐसे कह सकते हो. स्फीयर विल अगेन बिकम न्यूट्रल. ठीक है, एंड व्हेन स्फीयर विल बिकम न्यूट्रल अगेन इट विल गेन नेगेटिव चार्ज, एंड फाइनली इट विल हैव माइनस क्यू चार्ज, सो दैट its potential is equal to the potential of this space. All these things will happen in very short interval of time. So actually हुआ क्या, यहाँ से sphere गया, here it collided, coefficient of restitution is 0. It means what, it suppose it reached here with velocity v, it cannot come back with velocity v because coefficient of restitution is 0. It stayed there, and if it is staying in the negative space, what will happen, it will lose its positive potential and ultimately it will gain negative potential. So the ball will bounce back to the bottom plate carrying opposite charge they went up with. क्योंकि जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज ये गेन करेगा, अब ये वाला पॉजिटिव स्पेस इसको अट्रैक्ट करेगा, सो वापिस से वो नीचे आएगा, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग. ठीक है, सो कुछ ऐसा होगा. करेक्ट आंसर शुड बी डी. The ball will execute simple harmonic motion between two plates. Can we say this? पीरियोडिक तो दिख रहा है, बट पीरियोडिक भी हम नहीं कह सकते. क्या कह सकते हैं बताओ, पहले के बारे में क्या सोचते हो? बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, स्टिक नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, लूज करेगा, नहीं होगा. ए, ए में डाउट लग रहा है, ए ऑप्शन में डाउट हो रहा है किसी को? व्हाट यू थिंक, बताओ. मैम अगर ग्रेविटी को इग्नोर करें तो पीरियोडिक मोशन तो आ रहा ओके, है. सिंपल हार्मोनिक डाउट हो रहा है. मैम टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना इसमें. क्या क्या होगा, थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज. मैम भी ये रीजन हो सकता है कि टू एंड फ्रो मोशन लाइब्रेरी में. हाँ हाँ हाँ. तो सिंपल हार्मोनिक का केस क्या है तुम्हारा? सिंपल हार्मोनिक में क्या जरूरी है? फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ ऑपोजिट साइन, राइट? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? जब ये बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ ही लग रहा है ना, क्योंकि इनिशियली उसके पास पॉजिटिव चार्ज था. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अप सेंस. ऑन पॉजिटिव चार्ज फोर्स विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डिस्प्लेसमेंट अप हो रहा है, फोर्स भी अप लग रहा है, दोनों ही प्रोसेस में वो एक्सेलरेट कर रहा है. अगर तुम ध्यान से देखो तो फाइनली भी तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डाउन आ रहा है, and when it is coming downward, electric field is up, force will act on charge in the downward direction, again it will accelerate. So all energy it is losing while colliding with the particle. I mean, यहाँ पे एक स्फीयर था, एक से कोलाइड किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी उसका पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट? सो एसएचएम तो नहीं हो सकता, एसएचएम का केस नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारा सेम डायरेक्शन में दिख रहा है. डन. एंड फोर्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. पीरियोडिक का जहां तक केस है, इट कैन बी, क्योंकि तुम्हारा इनिशियली 0 वेलोसिटी से चला, finally it is reaching at that point, coefficient of restitution is becoming 0, and
जीरो मीन्स व्हाट? मीनिंग, बट पीरियोडिक भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? पीरियोडिक तभी कह सकते हैं व्हेन हियर वेलोसिटी वाज जीरो, इट गेन्ड वेलोसिटी, इट रीच्ड हियर. After reaching there, if during coefficient of during collision it is losing all its energy, again coming to zero velocity phase, again accelerating, then periodic. Otherwise, अगर collision के time पे कुछ speed अभी भी उसके पास बचा हुआ है combined body के पास, then we cannot talk like this. ठीक है? Then it will be difficult. Done है? I hope you got it. So option D will be correct here. And fifth को कैसे solve करोगे? The average current. Current तुम्हें निकालना है ना? Current को simply magnitude wise आप निकाल देना. Current को क्या कहते हैं हम? Current delta Q by delta T. So कितना टाइम लग रहा है? You just go with calculating acceleration here. ठीक है? और h height जाने में कितना टाइम लगा? Calculate that time. In that time, how much amount of charge is moving? Let's say n number of balls are going up. So if n number of balls are going up through h height, then current will be what? Nq by t, whatever time it is taking to go up. अब s equal to ut plus half at square आप लगा देना. So s is h, half acceleration you will write like qe by m, t square. From here you will get t. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज, ये प्लस वी था, ये माइनस वी था, तो टू भी होगा अगर ऐसा है तो. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है? डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू वी बाई एच. तो यहाँ पे ई को टू वी बाई एच रखना, आप टी को निकालना, एंड ट्राई टू सी करंट वोल्टेज से कैसे डिपेंड कर रहा है. यू कैन चेक दैट. ठीक है? There were more good questions left actually. Should we do this? कर लेते हैं ना इसको, थोड़ा कर लेते हैं. If you are having time, if you suggest I will do, otherwise we can close. हाँ, हाउ 2024 का. अच्छा, हाँ ये तो अभी कौन सा साल है? 2025 है या 24 है? हम 25 है। 25 है तो 24 का हो सकता है ना. अच्छा, तुम लॉस्ट जोन में हो. मुझे लगा मैं एक साल पीछे या आगे चली गई क्या. डरा रहे हो तुम लोग. मुझे लगा एक साल में भूल गई क्या. बाबा, डर गई थी मैं. तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है? यानी कि वी शुड क्लोज डिस्कशन. अगर ऐसा है तो वी कैन डू. देखो डाइपोल से क्वेश्चंस बहुत आए हैं, डाइपोल और इसका कॉम्बिनेशन. आई हैव सीन इट सो मच. सो आई फील लाइक यू पीपल शुड ट्राई इट एंड डू इट. कर लोगे? चलो ठीक है. क्या कहते हो सभी लोग, बताओ. आई विल टेक एवरीवन्स वोट. करेंगे मैम. यहाँ करोगे या रूम पे करोगे? पोल कर दो? नहीं, ये वही ज्यादा कर हो जाए. लेंगे बाद में. ठीक है, बाद में कर लोगे. ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है. ओके, ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली. ओके, तीन तीन क्वेश्चन बच गया यार. ठीक है, एक काम करूंगी मैं, शाम में सबसे अपडेट लूंगी ग्रुप में, एंड आई वांट इट्स आंसर्स. ठीक है, चलो कोई नहीं. आई विल शेयर द स्लाइड एंड यू पीपल विल बी डूइंग लेफ्ट थ्री क्वेश्चंस, एंड इन द इवनिंग आई विल बी शेयरिंग सोल्यूशन इफ यू रिक्वायर, बट अपडेट मी प्लीज इफ यू आर डूइंग. चलो ठीक है. ठीक है एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. केमिस्ट्री की भी क्लास होगी तुम लोगों का. लंच करो, आराम करो, एंड क्वेश्चन ढेर सारा करो. अच्छा प्रियांशु है ना तुम्हारा? क्वेश्चन था कुछ, एक सेकेंड. क्या पूछ रहे थे तुम? चैप्टर्स को कैसे करना है? चैप्टर्स को यार हर हर दिन तुम एक काम करो. जैसे किसी एक दिन मैकेनिक्स को फोकस करो, किसी एक दिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को फोकस करो.
ठीक है, किसी एक दिन तुम रे ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स को टारगेट करो, ये 3 में डिवाइड कर दो। ठीक है, मैकेनिक्स में तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन आ गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम्हारा ये सारे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, ईएमआई, एवरीथिंग इज देयर। सो हर हर टॉपिक से अगर तुम 2 को प्रैक्टिस करना चाहते हो एक दिन में, तो हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, 2 10 क्वेश्चन एवरी डे फ्रॉम 2 टॉपिक्स। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस टच में रहेगा तीनों से। ठीक है, तो मैकेनिक्स को प्रैक्टिस करने का ज्यादा जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्वेश्चन मोर और लेस रिपीट होता है, आई वुड से कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस तो नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, सो मोर इजियर। मैकेनिक्स को थोड़ा देखते रहो सही से। ठीक है, चलो, एवरीवन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव लंच, हैव रेस्ट, एंजॉय, बाय एवरीवन।